Dot is the fourth part of this reader. D-O-T, dot. Dot had. Dot had a p-o-t, pot of ilk. Dot had a pot of milk. Dot sat on the log. Dot sat on the log. The log is in the fog. The log is in the fog. Dot sat on the log in the fog. स्टार्टिंग में जब नया वर्ड सिखाएंगे तब बच्चे को फोनिक्स करेंगे. जब वो फोनिक्स के साथ वर्ड को 2 दफा या 3 दफा रिपीट कर चुका होगा फिर जस्ट टू रीड द सेंटेंस. अगर उस सेंटेंस में कोई नया वर्ड आएगा फिर आप फोनिक्स करेंगे. जैसे डॉट हैड, ये दोनों वर्ड्स बच्चा पढ़ चुका है. डॉग इज द न्यू वर्ड इन दिस सेंटेंस. सो डॉट हैड अ dog. Dot had a dog. Dot had a big dog. The dog is in the fog. Is in the ये सब वर्ड्स साइट वर्ड्स हैं. इनके फोनिक्स नहीं होंगे, इन्हें आप वैसे ही पढ़ेंगे. In this line, lot of fun is the new word. So let's read. Dot and the dog had a lot of fun in the fog. Dot and the dog had a lot of fun in the fog.